चेस खेलना है भाई, चेस। आज मजा आएगा। थोड़ा गेम खेल के चेस का भी थोड़ा माइंड रिसेट कर लेते हैं चेस खेलने के बाद। नहीं तो बोर हो जाता है। आवाज वगैरह बराबर है। फ्रेम ड्रॉप। फ्रेम ड्रॉप क्यों हो रहा है बीच बीच में? ठीक है, कोई ना। आवाज आ रहा है। एवरीथिंग लुक्स ओके। अभी चलो चालू करते हैं। चेस, चेस। पहले थोड़े पजल सॉल्व करेंगे। अब पजल सोल्यूशन करना। ठीक है, यही सॉल्व करने हैं या डेली वाले? डेली पजल पहले ना, बहुत दिन से किया नहीं। मैच स्टिक पिट स्टॉप पीस ड्रॉप वाइट टू मूव। वाइट टू मूव है। ना हो सकते है। मेरे को नहीं समझ में आ रहा है इसका सॉल्यूशन। ये आज का है।
आज कोई नहीं है। There's a better one. सॉल्यूशन मिले तो बता देना। मेरे को नहीं आ रहा है। देखा जाए तो बिशप टेक्स रुक ही विन है, नॉट कंप्लीटली बट व्हाट डू यू थिंक? रुक टेक्स ये भी नहीं, एंड ले लेते हैं। क्वीन की मूव है बट हाँ, क्वीन F6 क्यों? क्या मिल रहा है? अच्छा, एक ही ऑप्शन है। इधर 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 ना, सैक्रिफाइस भी नहीं। कैपेसिटी बंद हो गई मेरी चेस की, क्या बात कर रहे हैं? ओह यस, ठीक है ना, कुछ खास नहीं था। ऑलरेडी एक पॉन अपना राइट। वाइट टू मूव। डिंग 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 डिंग। मेरे को यही लग रहा है। आई
क्या लग रहा है इसका सॉल्यूशन? डिस्कवरिंग द विनिंग मोड। ओ रुक। उसके आगे क्या? पहले मैं सॉल्यूशन फाइंड कर लेता हूँ, अगर आपको मिले तो बता देना। पहले मैं सॉल्यूशन फाइंड कर लेता हूँ, अगर आपको मिले तो बता देना। हाँ, ये भी गलत है। हम्म, ठीक है, एक पॉसिबल सॉल्यूशन मिल गया है। ये भी नहीं। भाई क्या है, इतनी डिफिकल्ट क्यों पड़ रहा है मेरे को सॉल्यूशंस ढूंढने में? ओके, ये भी नहीं है। व्हाट? ये तो नहीं रहेगा ऑफ कोर्स। ये तो नहीं है। ये तो नहीं है। व्हाट? क्वीन की मुंह है? अच्छा। Why is this more bad? ओके, इसलिए। ओके। ब्लैक टू मूव। इससे क्या होगा? रुक के मुंह है। रुक टेक्स नाइट सोचा है, रुक टेक्स नाइट। हाँ बरो, रुक टेक्स नाइट ही सोचा था। विंड टेक्स आ रहा है, उसके आगे कुछ नहीं मिल रहा है। खेलते हैं, देखते हैं। क्वीन F5, इससे तो कुछ नहीं हो रहा है भाई। क्वीन फिर से इधर आ जाएगी। नहीं। हाँ, ये नहीं। ओह, अच्छा। थिंकिंग पावर बढ़ानी है भाई, थिंकिंग पावर बढ़ानी है। सब गलत हो रहा है, सब गलत हो रहा है। कुछ मुंह देख नहीं पा रहा हूँ।
धीरे धीरे फॉर्म में आ रहे हैं। डोंट चेकमेट। ओह भाई, क्यों भाई क्यों? वाइट टू मूव। वाइट मूव किधर हो रहा है? ऑफ कोर्स उधर हो रहा रहेगा। हाँ, किंग उधर तक कैसा पहुंच गया रे? क्रिएटेड है ये सब। Why don't check my toe, check my toe, check my toe? वैसे बेटर मूव, चेकमेट से बेटर मूव क्या है भाई? ये क्या गलत दिखा रहा है भाई? डोंट चेकमेट इसलिए ड्रॉ करनी है। वाइट टू मूव है ना, ड्रॉ करनी है, क्या करना है? नहीं मूवमेंट है क्या? किंग भी नहीं मूव हो रहा है, रुक और दो नाइट और एक बिशप, यही मूव हो रहा है। उसके इधर भी मूव हो रहा है, ड्रॉ हो रहा है। आई मीन जीत रहा है वाइट। आई थिंक हाँ। यस, ये कंफ्यूजिंग पजल था, चेकमेट नहीं करना था। ये उसका पजल था कि चेकमेट नहीं करना है। वाइट टू मूव, फॉरगो द फोर्क। ओके, फॉरगॉट द फोर्क, फोर्क नहीं करना है। और छोड़ के कुछ और देखना है बोल रहे हैं। हाँ, ओके। नेक्स्ट, फाइट टू मूव, डिस्कवरिंग टॉरे वर्सेस लास्कर। मतलब डिस्कवर करना है, डिस्कवर चेक, डिस्कवर लेके पिस लेना है, काहे लेना है? ओए हई, काहे लेना हई? नहीं, ये भी नहीं। आई थिंक मिल गया क्या? यस। चलो, ट्रायल खत्म हो गया। ट्रायल अभी सीखना है,
रुको पानी पी के आता हूँ। चलो लेसन सीखते ओपनिंग लास्ट टाइम किधर रुका है Not all games start with e4 or d4. Learn about white's less common options like c4, f4, b4, and others. Okay. Play the flank pawn move that controls d5 and turns the game into the English opening. Okay. Excellent D5. job. White begins a light square strategy with the English opening. Let's develop a minor piece that immediately helps control d5. Nice work. Can you activate your light squared bishop on the powerful h1a8 diagonal? You got it. White is ready to develop the bishop on the long diagonal, adding even more control to the light squares. Let's activate the light squared bishop. Excellent. White's light squared bishop is a powerful piece on the long diagonal, helping white control the central light squares. Black will usually play bishop b4 or bishop c5, with an interesting battle ahead. White control the center light square. Black will usually play bishop b4 or bishop c5. Okay. How can black move a center pawn and help prepare d5? Nicely done. Black is ready to strike in the center with d5. Let's play that move. Great job. Black fights against white's light square strategy in the English, and now the game has transposed into the queen's gambit declined. ये ओपनिंग स्टडी करने का एक एडवांटेज है, ये थिंकिंग बिहाइंड ईच मूव दिखा रहे हैं। एक्चुअली हम इतना थिंक नहीं करते, वो प्रॉब्लम है। बहुत बेसिक थिंग है जो बता रहे हैं, सो आई थिंक इट्स गुड थिंग। ठीक है। White is playing the bird's opening. Let's move a pawn directly in the center grab space. Nice work. Black has many sensible moves, such as knight f6. Since this position is a reversed Dutch defense, can you find a strong idea that develops black's dark squared bishop on the long a1 h8 diagonal? a1 h8. Whoa, ये क्यों? Nice try, but this does not prepare to develop black's dark squared bishop on the long diagonal. Try Okay, again. A1 h8. Sorry. Excellent. Black fianchettos the dark squared bishop on the long diagonal. Let's play that move. Dark square bishop. Okay. You got it. Black is playing a reverse Dutch defense 1d4 f5 with a solid position against the bird. Solid position. Birds. Okay, I guess. ठीक है. Not bad. Knight कैसे निकालेंगे? e6 करके. फिर तो ये nf6 करके. ठीक है. White has opened with the Larson's opening. Once again, let's grab space and control the center by pushing a pawn directly in the center. Nice try, Sorry. but we want to put a pawn direct. Excellent choice. Let's take a look at the other move that puts a pawn directly in the center. So defining. White has opened. Great job. White adds pressure to our e5 pawn. How can we best defend this pawn thinking about general opening principles? Either nf6. Add pressure or e5 pawn. How can we best defend it on thinking about the general opening principles? Okay, general opening principles के हिसाब से ये Nicely correct है. done. Black develops the knight to a natural square and controls the center pawn on e5.
Black will enjoy more space to develop the pieces thanks to having more pawns in the center. When we face openings that do not directly control the center, it's a good idea to take over the center yourself. Let's do that by putting a pawn directly in the center. Great move! Now let's look at the other pawn move that can be played directly in the center. When we face great move, White develops a piece and attacks e5. This is one moment when trading a center pawn for the opponent's flank pawn is a good idea. Let's capture White's pawn on b4 and understand why. Okay. White is threatening to capture our pawn on g7, so let's develop a knight to a natural square and prevent this idea. Excellent work. It seems strange to trade White's flank pawn for the center pawn, but Black has a strong advantage. Notice Black has 2 healthy pawn islands, compared to White having an isolated pawn on a2. Black is already able to castle on the next move, when the open e-file will be a great home for a rook. Nice. Okay. Thinking अच्छी है. I like the thinking. Thank White you. plays the wild grob's opening, not a great decision. Once again, let's take over the center with a pawn. Wait, e5 नहीं, d5. Sorry. Excellent decision. White plays the wild grob's opening. Black is invited to put 2 pawns directly in the center. Let's do it. ठीक है. Nice job. Black moves a second pawn into the center and attacks White's weak g4 pawn. Black already has an advantage by playing sensible opening moves. Great job handling these unorthodox openings. Okay. Ready for other beat. Explore the ideas behind some of the main 1. e4 openings. 1. e4 e5 2. Knight f3. Knight c6. Bishop c4 is the Italian opening. 3. Bishop b5 is the popular Rui Lopez. e4. White से ना e4 e5 and f3 and c6. Bishop c4 is the Italian opening. और अगर bishop b5 खेले तो Rui Lopez. I hate Rui Lopez. मतलब ब्लैक साइड से अगर कोई मेरे अगेंस्ट राय लोपेस खेलता है तो मेरे को अच्छा नहीं लगता क्योंकि बहुत गंदी पोजीशन हो जाती है. बहुत बार नहीं कंट्रोल कर पाया हूँ मैं राय लोपेस को, पर ठीक है. इटालियन ओपनिंग इज गुड. इक्वलाइज पोजीशन रहती है. Let's explore the Italian opening by moving our bishop to c4. Okay. Great job. White's bishop controls an excellent diagonal and White is ready to castle. After bishop c4, the opening is known as the Italian game. By playing knight f6, Black attacks White's pawn on e4. Can you find an aggressive idea that defends the e4 pawn and adds a second attacker to the f7 square? Do you find an aggressive idea that defends e4 pawn? Okay, of course. This is Nice try, but we are trying to find a move that both protects the e4 pawn and adds a second attacker to Black's f7 pawn. Try again. okay. ये मेरे को लग रहा है ये दे रहा है. Nicely found. White is already threatening knight takes f7, forking Black's queen and rook. Black must know exactly how to defend this extremely sharp position, or will end up in a terrible position. Since White may play knight g5, choose between playing h6, bishop e7, or bishop c5. Which move is best? Choose between f6. बिल्कुल नहीं. Bishop e7. Okay. Bishop c5. Excellent. I like bishop c5. You got it. Black's bishop moves to an active diagonal. White plays the solid move d3. Where should Black develop the knight on g8 to prepare castling? Knight f6 भी अच्छा है. I'll say knight e7. Nice try, but the knight is passively placed on e7 and could have been more active on f6. Notice if Black castles on the next move, queen h5 is a crushing move for White. Try again. Got it.
फिर NF6 ही option है. Exactly. But I White was should afraid play of a bishop solid G5. move such as castling, but white tries a premature attack. How can black calmly respond to this questionable move? Great decision. Black calmly castles, and now white continues to make overly aggressive move. Keep up the great work with these. Black actively defended against white's premature attack. White lost all development with a worse position. Great work. Okay. ठीक है, लेकिन ब्लैक से मेरे को ये पोजीशन खेलना अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि जीतना पड़ेगा तो ओपनिंग में जीतना पड़ेगा, नहीं तो कुछ फायदा नहीं है. देन इट्स इक्वल पोजीशन, क्योंकि ब्लैक का वो ऑलरेडी बहुत ओपन हो गया है, वाइट का नहीं, तो उसका एडवांटेज होना चाहिए. लेकिन आई डोंट थिंक कुछ हो रहा है, क्योंकि उसका नेक्स्ट मूव कैसल है, बिशप और नाइट निकल गया, हो गया नॉर्मल पोजीशन. फिर उल्टा मेरा किंग बाहर आ गया है, तो अटैक तो किंग साइड ही करना पड़ेगा. White has just played 3. Bishop b5, turning the game into the Ruy Lopez opening. Let's play black's traditional response, a6. Of course, एक ही मूव रहता है. To understand the Ruy Lopez, we have to understand that white cannot win a pawn with this move. What is black's best way to recapture the bishop? Great job. Black captures with the d-pawn, which opens up the queen and light-squared bishop. How can black... Nicely done. Black will regain the central pawn and ruin white's ability to castle. Black has a very comfortable position, which is why white does not try to win the pawn at this point. Let's play white's most popular move that moves our bishop to safety and keeps pressure on black's c6 knight. Good work. White keeps pressure against black's c6 knight. Black now puts pressure on e4. Should white defend this pawn or play another move? I think इसमें कैसल हो सकता है. नाइट टेक्स पॉन को रुकाया d5. Okay. I think castle. Powerful play. White castles, inviting black to take the pawn and open up the e-file. Excellent work. White attacks black's knight, ready to play knight takes e5 if the knight moves, or play d3 and force the knight to move if it is protected with a good game for white. White would love to play d4 and attack black's center. Can you find a strong pawn move that prepares d4 on the next move? Great job! White prepares the powerful d4 move, but it helps to save your bishop first. Where should it go? But it helps to save your bishop first. Where should it go? Bishop b3 या c2? क्या लगता है? Which is the good move? मैं ना ज़्यादा स्ट्रीमिंग किसकी करूँ वो कंफ्यूजन में हूँ, तो मैं एक पोल डालता हूँ. Q&A से अच्छा पोल करना है. हाँ,
FPS गेम, FPS में थोड़ा वीक हो, ठीक है। मैंने पोल डाल दिया है, बता दो कौन सा अच्छा लगता है आपको गेम खेलना। ठीक है, अभी फिर से कंटिन्यू करते हैं। आई थिंक बिशप c2 is good. Good job. Adding protection to white's central pawn and preparing d4 on the next move is also a strong idea. Can you find another strong bishop move? Great job. Look at that active bishop putting pressure on f7. Nice move. Now it's time to attack black's center with d4. अच्छा d6 खेला, मैं ब्लैक से भी सीख रहा हूँ। You got it. White aggressively attacks black's center, gaining space with a strong position. Let's finish our exploration of the Ruy Lopez by playing black's most solid response, bishop e7. Solid है? What? पहले बिशप c5 था, ओके, उसको लिए c3 खेला था, लेकिन ब्लैक के लिए अच्छा बिशप e7 है। Great job. Black's bishop moves to a solid square where it won't be attacked by a white pawn and prepares to castle kingside. White protects the e4 pawn. Choose black's best move, b5, 6, short castling, or d6. बाद में किंग बीच में नहीं आएगा अगर क्वीन टेक्स पॉन मारा तो, इसलिए बिशप e7 अच्छी मूव है। वो फिर से डिफेंस ही कर रहा है e5 पे। ठीक है, अभी रुक ने सपोर्ट कर दिया है उसको। चूज ब्लैक्स बेस्ट, b5, ओके, कैसल बेस्ट, d6, I don't think so, d6, रुक, कैसल, d6 भी अच्छी हुआ है, d6 खेला हुआ है बहुत बार मैंने। कैसल नहीं कर सकते बिकॉज बिशप टेक्स, पॉन टेक्स, नाइट टेक्स पॉन आ रहा है, so I think d6 is good. Black bishop moves to solid square. It won't be attacked by white. I'm prepared to castle kingside. White protects the e4 pawn. This is a solid idea, although black's pawn structure is weakened. Can you find a way to prevent bishop takes c6 and then play your d6 idea? Oh. Great job. Excellent. Always remember to protect your e5 pawn after your opponent protects their e4 pawn. Black will castle and complete development with a solid position. अच्छा, धन्यवाद. On unlimited research, try for free. Not today. Not today. मैंने क्या-क्या कंप्लीट किया है? Learn the key ideas for both sides in the sharp Benko gambit. हो गया क्या आज का? एनालिसिस में क्या है देखते हैं। एनालिसिस करना अच्छा लगता है। What is this? Add games. Set up position. No. Study load from game history load. कुछ अलग ही है रे। एंड गेम्स प्रैक्टिस करते हैं, कुछ है क्या करने जैसा? एंड गेम ट्रेनिंग ये $7 $15 per month। गेम रिव्यू चाहिए मेरे को, कोच एक्सप्लेनेशन, इनसाइट्स, ये सब अच्छे हैं। नो एड्स भी ठीक है, बॉट्स, लेसन्स, पजल्स। 7 days ठीक है।
ये प्लान ले सकता हूँ बाद में अगर डिसाइड किया तो इसमें क्या है जैसे फेसबुक इज बैक अच्छा with the team match Palo Alto I just started days per more players per team oh ये कुछ अलग है भाई 31 जैन का है क्या करे वीणा अभी हाँ चेस का तो खत्म हो गया अभी अपना पहले का गेम कंटिन्यू करते हैं क्या बोलते हैं रेडियो क्या कर गया आवाज एकदम शांत हो गया है वेयर इज गेम गॉड ऑफ वॉर फिर से कंटिन्यू करेंगे वो भी जल्दी जल्दी कंप्लीट करना है यार फिर मैं पूरा टाइम चेस खेल सकता हूँ और कोई तो दोस्त चाहिए मेरे को गेम खेलने के लिए आवाज चलो चलो करेंगे चलो करो आई गलती से रॉन्ग नंबर बताए हाँ अभी जाएंगे जाएंगे गेम में किधर है कंटिन्यू सब आवाज वगैरह ऑन है तो कुछ आवाज की जरूरत नहीं है एवरीथिंग लुक्स गुड चलो या लेट्स गो गाइस अभी बड़ी फाइट करनी है Excuse me, sir. Mind if I take a little peek at you? I promise I'll be Squirrel. brief. My goodness, what a strapping physique. Capable of an astounding variety of acts of violence, I imagine. What is happening? This must be the squirrel that tends the world tree. That delectable aroma. Could it be? Pardon the intrusion. Ah, yes. Amber resin. Delightfully nutty with a hint of squidding. No. Not one for gastronomic exploration, I see. Wait, if you're Ratatosker, why are you so different when we summon you for help? It's a long story. Hey. But you are correct. I am indeed Ratatosker. The one you know as Ratatosker is merely one of my spectral aspects. And a particularly nasty one at that. I consider him so far removed from myself that he's practically a different person. Speaking of, Bitter, would you like to come out and see your friends? Fuck off! I'm
busy! I suppose that was to be expected. Anyway, गाली दिया now that I've polished off all this resin for you, would you like the seed back? It is the seed. Indeed. A seed of Yggdrasil, to be precise. Since my dwarven tenants performed a little reconfiguration, you'll need seeds like these to open up new destinations on my tree. Your tree, huh? Yes, my tree. Here, let me show you. ग्राफिक्स मस्त है यार ग्राफिक्स देख के पगला जाता हूँ मैं Ah, so that's why good Master Brock needed an Alpine Paths split seed. into branches of Clearly, you have okay. important matters afoot. travel to Alfheim okay long journey awaits through Alfheim's gate the mystic gateway That seed you found unlocks Niflheim of all places, a realm as ancient as it is vaguely sticky. Svartalfheim remains at your disposal if you have unresolved business amongst the dwarves. enter If we're not going to Alfheim yet, it's probably best for Tyr to wait for us here. Back to Svartalfheim, huh? We still have unfinished business there. Those bloody mining rigs in the bay, for one. Sounds good. भागो let's go ओह क्या मस्त दिख रहा है इधर जाना है अबे पाथ गलत चूज किया मैं shit realm available to trial play center to open the map if flame क्या हुआ Eyes of Odin. इस हो रहा है क्या लैग हो रहा है भाई भाई अयो ये पीछे आ जा तू रुक जरा भाई साहब
क्या ग्लिच हुआ था भाई? भाई साहब गेम लैग हो रहा है भाई। फिर से चालू करता हूँ, रुक। डिंग 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 डिंग। हमको उधर जाना ही नहीं है तो हम भी इधर ही जाएंगे। करंटली लॉक क्यों है? सिंड्रेस हाउस। पहले सिंड्रेस हाउस जाते, कंफ्यूज हो गया मैं किधर जाना है। Mimir, how many stories have you told about Odin and Thor? And all the bad things they've done? Let's see how many we can remember. Seems like Father could use his memory refreshed. My memory of them requires no refreshment. They invaded our home. Yeah, but I'm talking about history. All the other people they've hurt. Let's see. Not now. Ah, there you are. I knew you hadn't forgotten me. ट्रैवल टू अल्फाइम। अभी अल्फाइम ढूंढो, ठीक है? ये अल्फाइम है। यस। Perhaps हम as we पहले इधर travel, ही गए थे you ना? can tell me क्या the glitch tale of हुआ? your prior visit to the land of the elves. Sure I can. ये लंबू आ रहा है अपने साथ शायद से। Alfheim was the first gotcha. time we ever roam traveled using your temple. Freya tried coming with us, but Odin cast a spell on her. She can't leave Midgard. That's terrible. So then we fought our way through an army of dark elves to get to the light. You interfered in the elf war. Not by choice. We sought to fill our Bifrost, and they attacked us. And the dark elves were covering it with their sticky hive stuff. When we freed it, light elves came back. They seemed better in Alfheim. Did they now? Alfheim. It's been so long. Not sure where the temple is from here, but that's where we'll find Grove's shrine. पहले लूटो लूटो लूटो, इधर कुछ है क्या? ना। I see the elves continue their war. Yeah, so much for things being better in Alfheim. ए तू कैसा उड़ी मारा रे मेरे बिना? Yikes. Winter hit Alfheim hard. No. Storms have plagued Alfheim's deserts long before Fimbulwinter. मेन पार्ट उधर है, हम नीचे जा रहे हैं क्योंकि लूटना है। ये क्या है? A living desert. Huh.
स्लाइड के ऊपर जा रही है भाई। और नहीं चलो ये लंबू को आगे नहीं भेजा क्या? लंबू को पीछे रखा है। Hold on. I hear something out there. Something big. ओए मेरे को लगा फाइट pain. करनी है। ये किधर से उड़ी मारा? What do you hear? Feels like some kind of animal. How could anything live in a storm like that? Plenty of caves under the desert. Not exactly a paragon of comfort, but the Dark Elves get on best they can. रुक। फिर भी अनलॉक नहीं हुआ। ओके ओह ऐसा अनलॉक नहीं, ये भी नहीं अनलॉक हुआ। Perhaps we can reach that brazier from above. ठीक है आ रहा हूँ। हम इधर से आ गए ना। हाँ There, the Temple of Light. Groa's shrine is at the top. Freyr never bothered returning to Alfheim, did he, Mimir? I know. I assumed the fate of his own realm took precedence. Wait, Freya's brother? Yes. Different cloth, that is. There's a barricade up ahead. What are those shiny rocks? Twilight Stone. A rare material that can take millennia to form. Majestic. Oh! I didn't know it could do that. Diapa! Reflect indicator changes color when lined up with the target. There's a gap in the fence over there. Where?
There's a gap in the fence over there. ऐसा कर ओ Oh, very clever. ऐसा करना था भाई तू लंबू कितना है Another rat! To the left! It's gonna explode! लूटो 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 इधर तो कुछ नहीं है Freya's brother. How was he involved? Long ago, Freyr of the Vanir traveled to Alfheim, where he discovered a once beautiful land devastated by ये war. लंबू का वो किधर से जा Using रहे his थे divine powers, he set about cultivating a tenuous peace among the elves. है तो नहीं इधर Did you mention how that piece fell apart as soon as he left? I was getting to it. You hear that? Oh no. That's enough, please. You don't need to do this. We don't want to hurt you. We do not have a choice. Whoa! Was that a bomb? We're the ones who freed the light. Why are you fighting us? We helped you last time. Atreus, focus. I hate Alphonse. Watch your left! Behind you! Incoming! Behind you! Incoming! They attacked us. More will follow once we're inside. Is there truly no other way? Not like they're giving us much of a choice. So your father said. I'm just naive, I suppose. No. Just an optimist, old friend. Tribute to Freyr, made by the elves. He must have left it here when he raced back to Vanaheim. What is this? A charm to ward off nightmares. ये चाँद In this case, Freyr's. Well, knowing the elves, there are probably more tributes to find. nothing much to discover here भाई भागो भाई It's so फाइट हो tall. गया अभी We came in from the top last time. Didn't realize all this was even down here. It's an older gate.
built to promote cooperation between the elves, but it looks like it's been sealed. I'll go first. Atreus, let me know when I've reached halfway. So, what's happening right now? This seal is meant to represent the balance of the realm when Freyr was here. Light and dark, working together in harmony. How's that look, Atreus? Good, I think. Father, now you go. Unfortunately for Alfheim, Freyr couldn't accept his sister's decision to marry Odin. He returned to Vanaheim and left this realm to its fate. To be fair, the Aesir did set him on fire that one time. The door should have opened. Are you sure it's balanced? Yeah, but the realm isn't. Not anymore. Father, try pulling it the other way. Yeah! And Tyr, you keep pushing forward. Oh, इसका नया है ये. Fine work, Atreus. Atreus. Shall we? Oh, What's the Dark Elf statue doing in the Light Temple? Temple of That's just Light. how they looked before the division. The division. Yes. The elves weren't always split between light and dark, you know. This statue depicts the elves before the war, before they discovered the power of the light. क्या मस्त है बे. Solid light. Guess some things don't change. No. Above the door, there's a light crystal. Yes. The stone briefly imparts a bit of light to your axe. That's useful. भाई इतना ब्यूटीफुल कौन बनाता है भाई? What's that sound? What the? No sense in spoiling the surprise. फाइट होने वाली है. क्या मस्त है. Whoa, it's the light. Ow. I've never seen the Lake of Souls so volatile. Aye. Fimbulwinter, you reckon? Of course, making the light unstable. So the base of this light well, that's the Lake of Souls. Yes. After the creation of the Nine Realms, fallen souls began to gather down in those waters. When the elves discovered its potential, they built this temple to harness that energy. A smashing Let's go. success, to say the least. Many of them became addicted to their newfound power, and thus, the Light Elves were born. ये है इधर. ना. Well done. Though I imagine our Light Elf friends will be less than pleased. कुछ है पहले. लायक मेरे को लूटना भी है. चलो कोई नहीं है. चलो आगे. Speaking of light elves, Let me try okay. talking to them again. They may... Best just to let these two do their thing, brother. incoming! Right side! Incoming! किधर है? Light ball! Watch out!
Behind you, brother! भाई हील कर रहा था यार. ऑलमोस्ट हो गया था यार. Speaking of light elves, Let me try talking to them again. They may... Best just to let these two do their thing, brother. pipe off! Watch out! Behind you, watch out! Poor souls. Here, they came across on light bridges. Now the bridges are gone. I have an idea to get us across. What? I can throw you. Lucky for us, swearing off violence doesn't mean he can't disfigure some architecture. This way. Shrine awaits. Chest. Kratos, where are you going? He's just looking around. He does this sometimes. Ah, a curious mind. Carry on. Excellent. Excellent. मस्त है. Excellent. The temple looks so different than I remember. It was all broken and covered in hive stuff last time we were here. These elves use Alfheim's light to enhance the temple. And themselves. Excellent. They definitely look more dangerous than last time. Oh, those were just the foot soldiers. They'll get more dangerous the further up we go. Great. अंधेरा ही अंधेरा. So if these elves use the light to build doors and make themselves stronger, what do the dark elves want with it? To return it back to its source. To them, the natural resources of Alfheim are safe. None more so than the light itself. Aye, the Light Elf's success came at a terrible price. Alfheim's once lively desert withered into a storm-ridden wasteland soon after the creation of this temple. Okay. There's more Twilight Stone up there. अरे बाजू भाई. There's gotta be a better angle on that Twilight Stone. क्या है ऊपर? More inspiring lyricism from the mind of Kvasir. ये भी है. किधर है वो? अच्छा उधर.
More light elves ahead. I'll handle this. Maybe that's not a great idea. Oh there, friends. Salutations. We mean you no harm. Tyr! Get back! At least I tried. I get it now. Why they keep fighting. The Dark Elves want the souls in the light left alone. The Light Elves want to keep using them. That's the long and short of it. Aye. So then, which side is right? Rarely is it so simple. And not our place to say. This is an elven conflict. I said as much the last time we were in Alfheim. Right. Another Output, chest output. over there. How do we reach it? We cannot. Let us continue. क्यों नहीं भाई? पहुंचेंगे हम। चेस्ट चाहिए हमको। क्यों मुझको नहीं रोक? इधर है। Let's go. They sure made a lot of these light doors. Fortifications. Aye. None too eager to let the Dark Elves run the roost again. इधर है। डायरेक्ट मार सकता हूँ क्या? डायरेक्ट नहीं मार सकता वाह। रिफ्लेक्ट कहाँ से करूँ फिर? Nice. Father, up there. इधर चेस्ट है उधर। ओह दिखा ही नहीं मेरे को। ये चालू नहीं है। ओए कहाँ आ गया? लोग चेस्ट है इधर। Hey, that looks interesting. लैग हो गया। मैं एस्केप क्यों दबा रहा हूँ? ये लैग हो रहा है।
ये नहीं है। इधर है वो। ओ ऊपर करो। नहीं। ना भाई। ये तो हो रहा है, रुक। नीचे को क्या मैं? यस छूट जाता है बे। रुक, मेरे को पहले वो लेना है। चेस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आजा। ये तो नहीं होता, नीचे जा। ये होना चाहिए, क्यों नहीं हो रहा है? ब्लू तो आ रहा है। देखो ये पिंक हो रहा है, मतलब नहीं है। नहीं, कुछ नहीं। ग्लिच है क्या? ब्लू आ रहा है।
ओह नीचे जा सकते हैं। ऐसा क्या हो रहा है? Oh, clever use of your axe, Kratos. आई कैसा हुआ? समझा नहीं लेकिन हो गया बस। Glad we explored. Relic. Oh no. These things smell awful. Back to it then. Excellent. Let's continue our ascent, yes? Yikes! They hit hard! रुक। Above you! Incoming! Jumper! हो गया? What became of Kvasir? Ripped apart by his audience. Well, one member of his audience. Well, Thor. Let's go. रुक, इधर कुछ है? रुके क्यों हो भाई? दरवाजे के पास खड़े रहो। अरे यार ये लोग ना। I suppose I'll leave you to it. ओए। भाई क्या डिफेंस है? Brother! Get up! Brother! ब्रदर ये मरता है तो ब्रदर बोलता है। उसके बिना हमको कुछ फर्क नहीं पड़ता है। किधर है? हाँ। I suppose I'll leave you to it then. Defense.
incoming! ओए कितने हैं रुक भाई किधर है Behind you, father! Behind you! ओए रुक भाई Come on, Kratos, off your back! ये फाइट के बाद रोक देते भाई मेरे को खाना बनाना है हर बार खाना बनाना रहता है मेरे को क्या करे I suppose I'll leave you to it then. Diablo! Behind you, look out! Behind you, incoming! Watch your left! हिल करने जा रहा था This is a fine mess. दोनों को अलग रखना पड़ेगा रुक दोनों एक साथ नहीं मार सकता मैं चल I suppose I'll leave you to it then. क्रिटिकल हिट Watch your left! That was violent. I'll meet you on the other side. तो ऊपर आने के लिए रास्ता कर रहा है क्या Whoa, deer can really jump. ओए ये क्या कर रहा हूँ चलो बंद कर देते हैं टाइम हो गया भाई मेरा मेरा टाइम हो गया मेरा टाइम हो गया मेरा टाइम हो गया फोकस नहीं हो रहा है क्या कभी कभी क्या समझ में नहीं आता फोकस चला जाता है चलो नेक्स्ट टाइम मिलते हैं ये लैग हो रहा है क्या कोई ना चलो बाय मिलते हैं बाय बाय गुड नाइट सायोनारा
चलो एंड कर रहे हैं, नेक्स्ट वीक मिलेंगे अभी। बाय।